आपकी एक पता है रील वायरल हुई थी बहुत ज्यादा. इट वाज विद रोहित शर्मा एंड शार्दुल ठाकुर. व्हाट वेंट ऑन इन दैट मोमेंट? वो आइडिया किसका था? रोहित भाई का था वो आइडिया. हाँ, आई वुडंट हैव गेस्ड. और वो किसने कोरियोग्राफ करी थी? वो बेसिकली ट्रेंडिंग था वो टाइम में. और उन्होंने वो वीडियो निकाला एंड देन ही शोड अस. बोला कि ये डांस करना है हम लोग को. ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस किए. हम लोग को कितना 1-2 घंटा तो लगा प्रैक्टिस में. एंड देन उसके बाद व्हेन वी वर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट, सबको इजीली नहीं आ रहा था. थोड़ा सा इधर उधर हम लोग को चॉप एंड चेंज करना पड़ा. एंड देन इवेंचुअली वी गॉट दैट वीडियो. कितने टेक्स लगे? नॉट किडिंग, अराउंड 20 to 25. Hello Shreyas Iyer, how are you? I'm good, how are you? I'm great. How are you feeling today? Feeling fantastic. Yeah? How are you doing? I'm great. I'm always great. But you know, मैं हमेशा से एक चीज़ आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि बहुत ही कम ऐसे गेस्ट या ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जिनको एफ्रो म्यूजिक पसंद है. So what is that love that you have for Afro music? And I'm asking because I love it myself. Oh yeah? Yeah. Makes us two of a kind. Yes. So I love Afro music because of the beats and the dance, the way African people generally, the way they move. It's so beautiful to watch and It's learn like from flowing. them. Yeah, the flow. They just go with the music. It's the groove. Just catches your eye. And then I developed this, thing to like Afro music. That was during the lockdown. Okay. Yeah. So lockdown, I started listening to one music on the loop, which was On the Low. Oh, nice. Yeah, by Burna Boy. And Yeah. then after that, suddenly you just get used to all these songs. They come back to back, and ऐसे करके मैंने डेवलप किया अपना लाइक. फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है? Burna Boy. Burna Boy. Wizkid भी अच्छा है वैसे. Wizkid, and there are many of them. Rima, Wizkid. Yeah, all of them. Yeah, They it's have your been jam, na? sensational. It's my jam to start my day with. Yeah. आपकी एक पता है रील वायरल हुई थी बहुत ज्यादा. इट वाज विद रोहित शर्मा एंड शार्दुल ठाकुर हाँ. इन विच यू गाइज वर डांसिंग. व्हाट वेंट ऑन इन दैट मोमेंट? वो आइडिया किसका था? रोहित भाई का था वो आइडिया. हाँ, आई वुडंट हैव गेस्ड. और वो किसने कोरियोग्राफ करी थी? वो बेसिकली ट्रेंडिंग था वो टाइम में. और उन्होंने वो वीडियो निकाला एंड देन ही शोड अस. बोला कि ये डांस करना है हम लोग को. तो ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस किए. हम लोग को कितना 1-2 घंटा तो लगा प्रैक्टिस में. एंड देन उसके बाद व्हेन वी वर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट, सबको इजीली नहीं आ रहा था. थोड़ा सा इधर उधर हम लोग को चॉप एंड चेंज करना पड़ा. एंड देन इवेंचुअली वी गॉट दैट वीडियो. कितने टेक्स लगे? नॉट किडिंग, अराउंड 20 to 25. शूट कौन कर रहा था ये? शूट हमारे टीम का एक मेंबर था तभी, जो मीडिया में थे. उनमें से किसने किया था. ओके, अच्छा चलो ठीक है, बहुत डांस की बात हो गई. सो वील कम बैक टू द टॉपिक इन हैंड. व्हिच हैज बीन द फेवरेट क्रिकेट मैच दैट you've played in your life? My favorite cricket match, obviously getting a century for India in the first game. Not the first game, sorry. My first ever century against New Zealand, and it was in Hamilton, which was outside of India. So it's something that has been in my memories forever, and probably one of my best knocks. वो फीलिंग क्या थी उस मोमेंट पे जब? I was getting goosebumps. I remember the day before the game, I saw this board inside the dressing room where all the people who have played on that particular ground, they had scored centuries. तो मैंने सोचा कि यार मेरा भी इधर नाम आएगा तो कितना अच्छा लगेगा. And then next day, as we say, when you manifest something, you get it. Yeah. वो next day मुझे मिल गया. So I was on cloud 9 with that feeling. Like how I am right now, ना we manifested you. Oh yeah. और फेवरेट क्रिकेट मैच कौन सा है जो आपने देखा, जो आपको देखना बहुत अच्छा लगा? The final of 2011 World Cup at 1KD, I was sitting in the stands. Yeah. And just to watch the match and the crowd, they were electrifying. Just to be part of the crowd at that point of time, it was phenomenal. वो एनर्जी फील होती है ना, वो वाइब्रेशन वहाँ पे बैठ के. Yeah, you just get goosebumps from within. और फेवरेट इनिंग्स कौन सी रही है अभी तक? वही innings जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैंने किया था वाली? 100. हाँ. पता है वैसे मुंबई इज सच अ डिफिकल्ट सिटी टू लिव इन. Also because it's fast paced, it's relentless, right? And even the cricket culture in Mumbai is very intense. Sure. So how does it feel having made it now? I never feel that I've made it, to be honest. No? No, because I am insatiable in my approach. I am always hungry for something more. If I achieve something, I am looking for something ahead. Even though I am thankful and grateful for where I am, but
there's a lot of learnings which I carry forward, and I want to achieve so many things in my life. So I'm never satisfied with anything. वो भूख अंदर से रहती है हमेशा. That hunger is always there. और पता है आई ऑलवेज बिन क्यूरियस अबाउट दिस वैसे तो कि मुंबई में ऐसी क्या बात है कि मुंबई की हवा में ऐसी क्या बात है दैट इट कीप्स प्रोड्यूसिंग सच क्रेजी बैटिंग टैलेंट कंसिस्टेंटली. पता नहीं You'd अभी agree? maybe because of the grind we go through since childhood, and obviously it's not that only Mumbaikars but everyone around the country, every kid, they go through this grind. But मुंबई को ऐसा अलग से मैं टैग नहीं कर सकता हूँ. बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ चुके हैं and they have been sensational in their achievements, and maybe just by looking at their achievements we are also motivated from within to get to the same heights as them. So yeah, that's what motivates us, I feel. एंड व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ कैप्टन? What do I look for in a captain? व्हाट आर सम क्वालिटीज दैट यू फील लाइक अ कैप्टन शुड हैव? I feel the most important part of being a captain is to keep yourself second to everyone. Because you have to have that understanding of what your players are going through. Some of them might be in high spirits, some of them would be low on that particular given day. So it's important to assess their mindset and never make decisions in spur of the moment. You cannot be impulsive. You have to think, and then at the 11th hour, as they say, you have to make a decision. And what is your leadership style like? I would say I'm more patient, Okay. even though it's pretty tough out there in the middle when we are playing the match. I try not to show my emotions and try to stay as calm as possible, which is pretty demanding at this point of time, as people don't like to react. Yeah. And if you react, then your weaknesses showcase to people. So it's important you stay as calm as possible. And pata hai, there were a lot of senior members in the team back in the day when you were handed captaincy for Delhi Capitals. Yeah. Yet that happened. So what was that feeling like in that moment? It was an overwhelming feeling. Yeah. Yeah, because there are so many players in the team who have played for the international level, and I had just come in the picture at that point of time. I was leading India A's team at that situation. I never imagined that I would be captaining a side so early, but at the back of my mind, I was prepared for it. I could be handed over the captaincy at any given point. So mentally I was there, I was ready. And the only thing I had to crack as a captain was to perform and deliver in the first game itself. And thankfully, I got 93 not out in that first game. So I was blessed to be in that situation, and inevitably the confidence shifted towards me and from my teammates, and that's what I wanted at that point of time. And from there on, I led for 2-3 years. Again for Delhi, and it was a fantastic journey. वैसी moments आई कि somebody would come up to you to ask for advice? Yeah, बहुत बार अभी बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं टीम में, बट उनसे भी सीखने बहुत कुछ मिलता है. बिकॉज जो अभी जेनजी आए हैं, दे आर फियरलेस इन देयर अप्रोच एंड देयर एटीट्यूड इज ओवर द टॉप. और अभी आप कोलकाता नाइट राइडर्स के भी कैप्टन हो. राइट. तो हाउ इज दैट टर्निंग आउट फॉर यू? Brilliant. So in the last 2 years, last year I didn't lead the side, but I was watching the games from outside. I was a bit disappointed, but I got through that phase. But the first year when I led for KKR, I think the management, the support staff, everyone were quite cordial and welcoming when I was the captain. So I had a beautiful journey with them as well. शाहरुख खान से मिले? मिला, but matches के बाद. वो एक्सपीरियंस कैसा था? I was overjoyed. Yeah. It was a heartwarming gesture for me in particular to meet him, because he's been my favorite actor since childhood. Really? Yeah. तो उनसे मिलना बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, and उनके घर पे जाके उनको विजिट करना. He's got that zest and aura, जैसे हम लोग कहते हैं कि when you look at a person, you just get that strong feeling, and
एनर्जी फ्रॉम दैट पर्सन, तो वो एक टाइप के पर्सनालिटी है. कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे शिवलरस हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, एब्सोल्युटली वो है. मेहमान नवाजी उनकी बहुत अच्छी है. बहुत टॉप नॉच. हाँ. Okay. Do you remember the first time that you met Sachin Tendulkar? Yes, I do. And? I do remember we were at our under 14 camp Okay. in Mumbai. Indoor practice था हम लोग का, तब मानसून था, तो वो आए थे एज अ ग्रुप, हमें उन्होंने लेक्चर दिया था. वो बीकेसी में आते रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो या दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई मेट हिम एंड सॉ हिम इन पर्सन. कैसा फीलिंग थी उस टाइम पे जब मिले आप? आप तो छोटे थे काफ़ी. तो बहुत छोटा, अंडर 14. तो जैसे हम कहते थे कि ही इज़ अ गॉड लाइक फिगर, और वो सामने के खड़े हुए थे तो स्पीचलेस. और अभी लास्ट टाइम कब मिले उनसे? लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के टाइम में मैं मिला था उनको. तभी वो जब एज सुन एज वी एंटर नेशनल एंथम के लिए हम जब खड़े होते हैं, तभी उनको ऐसे ही मैंने हाथ मिलाया था. दैट वाज द लास्ट टाइम. इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बहुत आवाज़ था, बट या. बचपन में कभी ऐसे सोचा था कि ये वाली जर्नी भी मैं ट्रैवर्स करूंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था. जैसे हमने पहले कॉन्वर्सेशन किया कि एवरीथिंग हैपेंस इन स्पॉन्टेनिटी. Spontaneity. या तो वैसे ही हुआ. कोई एक ऐसी एडवाइस है जो आपको किसी क्रिकेटर ने दी बट यू होल्ड इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट? मुझे बहुत सारे एडवाइसेस मिले, बट इन पर्टिकुलर देयर इज a teammate of mine who has been a teammate of mine, and now he's the assistant coach in KKR. His name is Abhishek Nair. He's very close to me and he's like my big brother. So whatever advice he gives me, I just take it because I know it comes from the bottom of his heart and he wants good for me. So बहुत सारे ऐसे उसने दिए, but one that stands out is that what made me come at this level, international level, is that I play the situation pretty well. Like, say for example in a game, my temperament level to perform, it's better, and that's what has helped me to reach where I am right now. So to think at the right time, at the right moment, and what the team requires in that given point of time, that decision making, he said that you need to be having that throughout. No matter whatever people say, you just believe in your abilities and just focus on all these points and you'll be sorted. That was one of the points. Yeah. पता है, it is said that one really needs to be mentally tough to be an India cricketer or to be an athlete. Yeah. But Novak Djokovic said that being mentally tough is not a gift. It is something that can be learned, that can be practiced. Yeah. Do you agree? Absolutely. I feel that it comes from meditation, it's come from visualization, and all these things we don't give that much of an importance, because the way you breathe in pressure situation, it's something that dictates your body language and also that self-belief. You can observe so many people on the field during pressure situation, their body language, their outlook in general changes so much. So I feel all these things, when practiced, they can define your body language and they can basically help you overcome that hurdle, that obstacle which you are facing when you're not doing all these aspects. आपने इस बारे में पहले बात करी है that you were an introvert growing up, Yeah. and clearly now you're not. Well, if I'm answering so well, definitely not. So how does one That's make quite that? humble of me. I'm modest, sorry. Yes, that is quite modest of you. Ironically, ये बोल के देखा आप modest नहीं रहा ना? इसके लिए बोला ना मैंने. हाँ, ठीक है. But how does one make that journey from being an introvert to being an extrovert, or what you are right now, the confidence that you have? It's a learning process, I feel. This is something, as you mentioned earlier, Novak Djokovic said that you have to practice it over and over again. I wasn't confident enough because of my peers, my upbringing, and I was in all boys school. So वहाँ पे when you don't get to interact much, like you don't know where you are as an individual. So growing up, I traveled to England. I played club cricket over there. I had to do my clothes by myself. I had to make food. I had to struggle to make sure that every move that I make is right and I make the right decision. So वहाँ पर इतना कुछ सीखा मैं. वहाँ से यहाँ पर आके
gradually I realized that how important it is to learn things by yourself rather than people telling you to do certain things. Because India में तो आपको help मिल जाता है यहाँ पे, but वहाँ पे standard of living is completely different. So the struggle I went through over there and the obstacles I overcame personally, it taught me a lot of stuff. And then उस हिसाब से धीरे धीरे मेरा confidence बढ़ते गया जैसे ही मैं इंडिया में आया. फिर बहुत सारे ऐसे यंग लोग देखते हैं हमारा चैनल, सो यू नो, एंड दे स्ट्रगल विद दिस अ लॉट एज वेल. So maybe coming from you, it would mean a lot for them. What do you think? What does it take to bounce back from setbacks? I think there is no right answer to that. There is no right answer to that. You need to have that self-belief. For me, that works. For some other person, there might be a different mantra, and they have to figure out themselves. You have to believe, need to have that belief in your abilities, your work ethics, and if your preparation is right, then rest of it would be taken care by itself. So you don't have to think about what will happen to me. Stay in the present and not think much about the future. And what is the hardest thing you have to give up to be where you are today? I personally feel that you don't have to give up anything. It's a choice at the end of the day that you make. So what is that hardest choice then? Hardest choice? I mean, where you are right now, whatever decision you take in your life, it's a choice. So there is no sacrifice. That's what I mean. Whatever you choose, it's a choice, and you don't have to say to yourself that this is the hardest thing that I've done. Are you getting what I'm trying to say? I guess a little. But just say, for example, for me to be where I am right Yeah. now, at least, मेरे को I also had to make those hard choices in life, right? क्योंकि अगर वो नहीं करोगे, कहते हैं ना, there are no free lunches in the world. So similarly, I've had to give up some part of my sleep, some of my indulgences, whether Yeah. it was sugar, whether it was being very social or anything to get here where I am. But the So that hardest. depends on what target you set for yourself, right? If you want to become slim, you give up on sugar and gluten, all these aspects. If you want to reach at a greater height, you have to, I wouldn't say sacrifice, you have to choose the right stuff for yourself. Okay, fair Yeah. enough. So if I know what is the target, then I can tell you what do you want to give up on. आज की डेट में कोई ऐसे चीज़ें हैं जो आपको एंग्शियस फील करवाती हैं? Every time, जब भी मैं, when I go for a match or before the match, there is always butterfly in my stomach. Yeah. How do Yeah. you deal with that? क्योंकि it happens with me too. So I'll take that personally. I am happy as long as it's there. I know that I am worried about what I'm doing and I'm focused. When it's gone, then I know that it's time to hang my boots and go Yeah. from there. That's a So- great way to look at it. Yeah, and I also know that once I step onto the field, everything is gone. Stadium is empty. I can only see players around me, and it's like a competition happening. So that's the fun fact of it. हमारे शो पे ना एक बारी बादशाह आए हुए थे. बादशाह रैपर है, आपको पता है? Sure. ओके, सो हमारे शो पे एक बार बादशाह आए हुए थे और हमने उनसे पूछा था व्हाट डज फेम मीन टू यू. तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया. उन्होंने बोला कि फेम इज किराए का घर, कि Yeah. आज है कल नहीं है. Right. तो आपके लिए इफ यू हैड टू डिफाइन फेम, व्हाट इज फेम फॉर यू? I would second that, to be honest. आज है कल नहीं है. He's hit the nail on the head. क्योंकि आप जितना ऊपर जा सकते हो उतना नीचे भी गिर सकते हो. तो it's important that you stay in the center, stay down to earth, and always have that gratitude towards everyone, like, because whoever has helped you to reach where you are in your career, you always have to be appreciative of the fact that without these people I wouldn't be here, and the sacrifice they have made for you, that is the most important of everything. So you need to have that sort of respect and be humble around everyone. एक चीज़ पूछूं, Sure. डू यू हैव अ लव लैंग्वेज?
Love language. Do you know what a love language is? Yeah, it's touch, caring. So दो basically, तीन ऐसा 4 हाँ, gestures हाँ, है, right? 4 या 5 चीजें Yeah. होती हैं जब हम ऐसे नहीं बोल पाते that I love you. You show it through So actions. you show it through different things. Okay. कुछ लोगों के लिए वो words of affirmation होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो gestures होते हैं, कुछ Right. लोगों के लिए physical touch होता है, कुछ लोगों के लिए gifting होती है. So what do you think is your love language? My love language, I would say it's insulting. To be honest, you know, whenever I love someone closely, I love to play around with them. Like, I wouldn't say insult, but have a banter. मजे लेना, Yeah, टांग maze खींचना. lena, maze lena. So that is one way of me showing love to someone. And the other way, I would say by gifting. I love to gift stuff. What are your friendships like? वैसे एक थोड़ा आइडिया तो हमें मिल गया आपके आंसर से, but what are your friendships like? What are my friendships like? एज इन जैसे हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं कि उनके लिए मेल फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज इट्स अ मेंस प्लेटफॉर्म. Yeah. सो आपकी लड़कों में वो जो दोस्ती यारी होती है, हाउ वुड यू डिफाइन दैट? As I said, we keep insulting each other, and you have to be ready to take it back in friendship. Yeah, if you can take it back, only then you can be good friends with someone, and you can basically attach with them. If you can't, then वो respect mutually नहीं रहेगा. तो फिर उस हिसाब से आपको फ्रेंड्स पिक एंड चूज करना पड़ेगा. आपने कर लिए अपने सारे फ्रेंड्स? हाँ, मुझे पता है कौन ले सकते हैं और कौन दे भी सकते हैं. क्रिकेट में आपके दोस्त कौन कौन है, सब लोग हैं मेरे दोस्त. ऐसे खास वाले जिनके साथ कोई भी मजाक किया चल जाता है? खास है, बहुत सारे यंगस्टर्स है. जैसे अभी जो आए नए टीम में यशस्वी जायसवाल है, फिर अभी सरफराज खान ने डेब्यू किया, ये सब मुंबई वाले हैं. इनके साथ क्योंकि मैं छोटे से खेलते आ रहा हूँ, तो वो बॉन्डिंग है. बॉन्डिंग रहा है छोटे से. एंड शार्दुल ठाकुर है, देन रोहित भाई के साथ भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग कैसे एक दूसरे पे बीफ करते हैं ड्रेसिंग रूम में. पता है, मैं रिसर्च कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस दीज देसी मुंबई क्रिकेट स्लैंग्स जिनका मतलब मेरे को नहीं पता. तो अगर मैं फटाफट आपसे 2-3 वो पूछूं तो आप बताओगे? कौआ. कौआ जो मैं भी उड़ाता हूँ बैटिंग के टाइम में बहुत. कौआ मतलब if you hit it एयर में, नहीं ऊपर उड़ाया अच्छा, और आउट हो गया. ओ, ऊपर उड़ा के आउट हो गया. कौआ इफ यू गो फॉर अ 6 और टाइम नहीं होता बराबर, तो कौआ उड़ा. जो मैं भी उड़ा देती हूँ. क्रिकेट खेलने के टाइम. हाँ. आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं खेलती हूँ? नहीं, सरप्राइज एलिमेंट. बिकॉज यू सेड दैट यू आर लेजी व्हेन यू Yes, गेम, तो that is true. इमेजिन नहीं किया मैंने. ऐसे सबके सामने नहीं बोलना था. ओके, अंधा. अंधा. अंधा तो कभी सुना नहीं है. अंधाधुंध अंधा तो नहीं, अंधा मुंबई स्लैंग नहीं है. नहीं है. अच्छा, गोली. गोली डाल रहा है. गोली डाल रहा है मतलब बहुत तेज फेंक रहा है बॉल. ओके. Yeah. और कोई एक आधी आप बता दो हमें मुंबई क्रिकेट स्लैंग जो देसी आप जब खेलते थे तब चलती थी. कावड़ा उड़ोला. बुंदा. बुंदा क्या बुंदा होता है? मार रहा है मतलब फेंक रहा है. हाँ. थ्रोइंग द बॉल. इज नॉट बॉलिंग विद अ क्लीन एक्शन. थोड़ा सा चक कर रहा है बॉल. सॉरी. ओके. देन और भी क्या, काठी. काठी. काठी की- उड़वला मतलब बोल्ड कर दिया. मतलब जब इस स्टंप को बॉल लगते बॉलिंग के टाइम फ्लिप हो गया एकदम. How was that moment? इफ वी आर फील्डिंग वी आर हैप्पी. अगर मेरा खुद का डंडा उड़ गया है तो फिर क्या. वैसे आप स्नीकर हेड हो ना? आई एम, यस. कितने स्नीकर्स होंगे आपके पास? कितने पेयर्स? नहीं पता, 100 के ऊपर. बट वाओ. फेवरेट पेयर ऑफ स्नीकर्स कौन सा है आपका? फेवरेट पेयर नाइकी का ही है, एयर फोर्स. इट हैज गॉट दैट सिल्वर टिक एंड इट्स ब्लू कलर. To be honest, I've been lucky. I am with Nike as an athlete, and blessed to have them with me around for so many years. So, जब भी मैं जाता हूँ ऐसे कि ये वाला चाहिए अच्छे से, then they send it to me. So cool. कोई ऐसी नेक्स्ट चीज है जो आपको खरीदनी है लिस्ट में? लिस्ट में तो बहुत सारे चीजेस है. चीजेस बोल रहा हूँ. लिस्ट में तो बहुत सारी चीज है जो मुझे खरीदना है, बट टॉप प्रायोरिटी ऑब्वियसली और एक घर.
आपके भी दिमाग में ऐसी चीज़ रहती है कि इस टाइप का घर मेरे को बचपन से चाहिए था, अब मैं ऐसा घर बनाऊंगा अपना? जिसके घर पे जाके मैं देखता हूँ कि ऐसे टाइप का घर चाहिए, वो मुंबई में बनाना बहुत मुश्किल है। ये तो क्योंकि जब मैं दिल्ली में जाता था हम्म। लोगों के घर पे, तो महल जैसा फीलिंग आता था। हम्म। और वैसा घर मुंबई में बनाना, इट्स आर्डियस, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। Yeah. तो ऑब्वियसली देखते हैं, आगे जाके हो गया हम्म। तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी बढ़िया है, क्योंकि आप ऑलवेज आपके सर पे छत है रहने के लिए भी, तो यू शुड बी happy with Grateful. what you have as of now. Yeah. That is true. And we're very happy with you giving us your time. Thank you so much, Shreyas. Pleasure It to was be here. lovely talking to you. Likewise. And we will come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Men's XP.